Is riding to the right of the President's car, leading his elite body of horsemen mounted on his charger Virat. To the left of the President's car is the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, mounted on his charger Victory. The ceremonial escort under the Commandant is made up of two divisions, one in front of the President's car and one in the rear. The front division is being commanded by Rehearsal Major Dilbagh Singh astride Run Vijay. Immediately behind the President's car is the trumpeter on his grey steel ace, followed by the regimental colours carried by Rehearsal Lakhwinder Singh, who is mounted on Arya. The rear division is under the command of Rehearsal Rajesh. Ladies and gentlemen, look towards Rashtrapati Bhavan. You can see the first formation flying in, consisting of 4 B-17, B-5 helicopters of 115 helicopter unit. The helicopters are flying in a wide glass formation, carrying the national ensign and service ensign. Leading the flight past, trooping the national flag, Wing Commander Nikhil Mehrotra. Followed by Wing Commander Mayank Palibar, trooping Indian Army flag, Wing Commander Debrod, trooping Indian Navy flag, Wing Commander AJ Dev, trooping the Indian Air Force flag. Showering petals to greet the spectator. Now, Rashtrapat, here comes the Wing Commander heralding this year's Constitution. The champions of the Indo-Pak War of 1971, we have the wheels of history rolling down the magnificent Rajpath. Approaching the saluting desk, next detachment is Centurion tank of 17 Pune horse led by Captain Rahul Sharma. Second Lieutenant Arun Petrapal Paramveer Chakra of Pune horse is forever remembered for his valiant stand in the Centurion named Pama Gusta in the Battle of Basantpur, where the Centurion inflicted heavy casualty on the Pakistani side. Centurion tank led by Captain Rahul Sharma, ladies and gentlemen, the pride of India's historic legacy. Motto of the regiment, Tanveer Jai Sada. और अभी आप देख रहे हैं PT-76 जो कि बिल्कुल सलामी मंच के सामने है। कमांडर कैप्टन अंशुमन तिवारी। PT-76 का प्रयोग 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में किया गया। 1971 में पूर्वी थिएटर की बोगरा की जंग में This is a high mobility tractor vehicle based assault bridge, which was inducted in the Corps of Engineers in 1970s from Czechoslovakia, but now has been indigenized by Bharat Earth Movers Limited, led by Lieutenant Siddharth Sinha. Motto of the regiment is Patineri Pottupalam. लेफ्टिनेंट दीपांशु लालर की अगुवाई में 38 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम भारत में निर्मित एक विशेष ब्रिजिंग इक्विपमेंट। जैसा नाम वैसा काम, जरूरत या तत्व सर्वत्र, चाहे गैप नीला हो या सूखा, चाहे ब्रिज की ऊंचाई कम रखनी हो या ज्यादा, 75 मीटर तक पुल बनाने का सामर्थ्य,
विविध सामरिक परिस्थितियों में तीव्र गति से पुल बिछाने और हटाने का सामर्थ्य, आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण, रेजिमेंट का आदर्श सदा आगे, सबसे आगे। सलामी मंच की ओर अग्रसर अगला वाहन पूर्व सिग्नल के सबसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हंगेरियन टेक्नोलॉजी 16 नेतृत्व 14वीं डब्ल्यू बटालियन के कैप्टन गणेश नन्नावाले द्वारा। भारतीय सेना का पहला इंटीग्रेटेड डब्ल्यू सिस्टम, जिसने पिछले 3 दशकों से हमारी युद्ध क्षमता को सशक्त बनाते हुए ऑपरेशन राइनो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम जैसे हर रण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही दूसरा वाहन नवीनतम एवं अति आधुनिक ईडब्ल्यू सिस्टम तरंग शक्ति का नेतृत्व 10वीं। इसके साथ ही दूसरा वाहन नवीनतम एवं अति आधुनिक ईडब्ल्यू सिस्टम तरंग शक्ति का नेतृत्व 10वीं डब्ल्यू बटालियन के मेजर विवेक सहरावत द्वारा। दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भेद कर उसकी सटीक सूचना देने में पूरी तरह से सक्षम। 111 वर्षों का गौरवशाली इतिहास। पूर्व सिग्नल ने दोनों विश्व युद्धों के अलावा आजादी के बाद के सभी ऑपरेशन में भाग लिया। आदर्श वाक्य, तीव्र, चौकस, स्विफ्ट एंड सिक्योर। After India's momentous victory in the 1971 Indo-Pak War, the air defense artillery was substantially modernized with the induction of Tiger Cat missile system in 1972. Next detachment of HT-16 Tiger Cat missile system of Army Air Defense College, led by Captain Ranjit Singh of 512 Light Air Defense Missile Regiment. It was de-inducted in 1982 and paved the way for Trishul, Akash and Barak missiles under the banner of Atmanirbhar India. Motto of Army Air Defense, आकाश शत्रु जनी। और अब सलामी मंच तक पहुंचता अगला दस्ता आकाश मिसाइल प्रणाली का है। नेतृत्व कर रहे हैं 128 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन अभय सिंह। आकाश मिसाइल प्रणाली स्वदेशी तकनीक से विकसित पहली मिसाइल प्रणाली है। ये मिसाइल धरातल से हवा में कम दूरी तक के दुश्मन के जहाजों पर प्रहार करके नष्ट कर सकता है। ये प्रणाली की खासियत ये है, ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाके की निगरानी कर सकती है और दुश्मन के लड़ाकू विमानों The saluting theirs in the sky is the Rudra formation of Indian Army Aviation Corps. The future battlefield will be dominated by forces which have speed, mobility and lethal air power. Rudra formation led by Colonel आजादी के अमृत महोत्सव के अनुरूप भारतीय थल सेना के पिछले 75 वर्षों की वैभवशाली विजय यात्रा को जीवंत करता आज का ऐतिहासिक परेड, जिसमें आजादी के दशक की वर्दी तथा हथियारों की झलकियां हैं, स्वतंत्र एवं स्वावलंबी भारत की प्रगति का गौरव भी शामिल है। आज के विभिन्न मार्चिंग दस्ते 1950 के दशक की वर्दी एवं 303 राइफल से वीर चक्र, 48 शौर्य चक्र तथा कई अन्य सैन्य सम्मानों से सुसज्जित। गौरवशाली कदमों से सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ राजपूत रेजिमेंट आदर्श वाक्य बोल Battalion of Jammu and Kashmir Light Infantry. The Jammu and Kashmir Light Infantry was initially raised as Jammu and Kashmir Militia, which participated valiantly in 1965 and 1971 wars. The regiment played a pivotal role in the tricolor unfurling at the Siachen Glacier after negating the nefarious designs of the enemy. Regiment's motto, Balidanam Veer Lakshanam, war crime, Bharat Mata ki Jai. हर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी माला खोट। दुश्मन आगौट और झांकी झांकी के अग्रभाग में 1946 नौसेना के अभ्यास को दिखाया गया। झांकी के पिछले भाग में वर्ष 1983 से 2021 तक भारतीय नौसेना की मेक इन इंडिया को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। Ladies and gentlemen, we are complimenting you. Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force Band playing the tune Sound Barrier Pet March. Band comprises of 3 drum majors and 72 musicians. This band has enthralled our countrymen with its soul-stirring and lilting tunes. Sit back and enjoy the music. Band led by Warrant Officer Ashok Kumar.
The champions of the Indo-Pak War of 1971. We have the wheels of history rolling down the magnificent Rajpath. Approaching the saluting desk, next detachment is Centurion tank of 17 Pune horse led by Captain Rahul Sharma. Second Lieutenant Arun Kshetrapal Paramveer Chakra of Pune horse is forever remembered for his valiant stand in the Centurion named Fama Gusta in the Battle of Basantar, where the Centurion inflicted heavy casualty on the Pakistani side. Centurion tank led by Captain Rahul Sharma, ladies and gentlemen, the pride of India's historic legacy. Motto of the regiment, Tanveer Jai Sada. और अभी आप देख रहे हैं PT-76 जो कि बिल्कुल सलामी मंच के सामने है। कमांडर कैप्टन अंशुमन तिवारी। PT-76 का प्रयोग 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में किया गया। 1971 में पूर्वी थिएटर की बोगरा की जंग में AIP is an advanced technology developed by DRDO, a silent power source to propel the naval submarines when submerged. With the use of AIP system, the submarine can remain submerged for a longer period, making it more lethal and quieter than other submarines. A testimony of defense R&D efforts towards realization of vision of Atmanirbhar Bharat to several lines in critical defense technology. Going past the saluting desk, AIP, Air Independent Propulsion System for Submarines. Ladies and gentlemen, you can now witness smart, well turned out and synchronized contingent. Marching in front of you are the sentinels of our seas, the Indian Coast Guard, always ready, relevant and responsive. Led by Deputy Commandant H. New enthusiasm and new vitality. Led by Senior Under Officer Rupendra Singh Chauhan of NCC Directorate Punjab. NCC inculcates the awareness among youth and engages them to be a force that can transform our nation. The NCC is one of the largest youth uniformed organizations in the world. The cadets have excelled in humanitarian aid, sports and adventure activities. The NCC is at the forefront of nation building through its youth power. Marching on the tune of Kadam Kadam Badhaiga. Ladies and gentlemen, in front of saluting day, we have the combined military band of musicians from the Corps of Military Police Regimental Center, Kumaon Regimental Center, Bihar Regimental Center and AS. Led by Subedar Major L.D. Mahapatru and assisted by Subedar Jagannath, Subedar Arjun Kumar. We have fun in our lives, we have rage in our hearts. We have the belief to choose our road. We have the courage to stay on it. We have the will to find our way. Because we are the girls of India. The captains of the other two Dorniers are Wing Commander Shubham Mishra and Wing Commander Abhishek. Kargil formation 1971 के युद्ध के विजय की गौरव गाथा को एक बार फिर जीवंत करता आज इस राजपथ पर एक डकोटा विमान। उस समय में एक जैसी क्षमताओं के साथ हमला कर सकता है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य साहसम विजयते। The next detachment is APC Topaz led by Major Ravi Kumar of Mechanized Infantry Regiment Center. The OT-62 Topaz is a series of amphibious track armored personnel carriers. The lightweight APC played a pivotal role in 1971 war in the Western Theatre. The obstacle crossing capability along with its amphibious capability helped
Indian troops to carry out swift maneuvers across the theatre of operations, thereby maintaining surprise. And behind this, next detachment of BMP-1 of Mechanized Infantry Regiment Center, led by Nayak Subedar Shyam Sundar. Post the 1965 Indo-Pak War, when a need was felt to enhance the mobility of our infantry to keep pace with tanks, several infantry battalions were equipped with armored person carriers. In 1979, the Mechanized Infantry Regiment was raised and started being equipped with BMP-1, which was a modern and potent weapon platform. The BMP-1 is armed with a 73 mm Sood bore gun, the 7.62 mm coaxial gun. Motto of the regiment, Veerta और विश्वास. नए एवं पुराने हथियारों की श्रृंखला में राजपथ पर अपने शौर्य के हस्ताक्षर करता अगला मैकेनाइज्ड दस्ता इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल BMP और विश्वास. नए एवं पुराने हथियारों की श्रृंखला में राजपथ पर अपने शौर्य के हस्ताक्षर करता अगला मैकेनाइज्ड दस्ता इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल BMP नेतृत्व इसी बटालियन ब्रिगेड ऑफ गार्ड नेटिव स्टेट लेफ्टिनेंट ऋषिकेश सागर 30 मिलीमीटर कैनन 7.6 मिलीमीटर प्रेक्षित मशीन गन तथा एंटी-टैंक राइफल मिसाइल से सुसज्जित. इसमें अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग साइट के प्रावधान के साथ रात के अंधेरे में 4 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तनाबूद नाबूद करने की क्षमता प्रदान की गई है. जल और थल दोनों में प्रबल BMP-2 आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहले. In front of the Soviet air, the attachment of 75 MiG 24 Pack Howitzer Mark 1 of Artillery Center Nasik, led by Major P. Shankar Dutt. 75-24. मुझे लगा वो बिड़ गया, बिड़ गया. और अब घातक मानव क्षमता वाले एक Mi-35 हेलीकॉप्टर के साथ 4 अपाचे हेलीकॉप्टर अच्छा वो सब एक बार में आए थे फिर अलग. कमांडिंग ऑफिसर वंस द 4 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन. ये ऐसे आगे पीछे आए जा रहे हैं.